Hello everyone and welcome back to Easy English with मनोज मैथ्यू here and आज की लेसन में हम थोड़ा बहुत टेंसेस के रिलेटेड लर्न करेंगे that is all about present continuous tense. I hope you already know what present continuous tense is all about. Present continuous tense is normally used इसलिए किया जाता है कि कोई भी एक्शन कंटिन्यूसली चल रहा है उसको दिखाने के लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यूज कर रहे हैं. कंटिन्यूस मीन्स गोइंग ऑन, एन एक्शन इज गोइंग ऑन नाउ. अभी हमारे सामने कोई भी एक्शन चल रहा है उसको दिखाने के लिए या उसके बारे में बोलने के लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यूज किया जाता है. ठीक. सो हियर आई वुड लाइक टू गिव यू सम नोट्स that I will be writing here on this whiteboard. So if you feel comfortable, you can take notes, or else you can just watch the full video and learn a simple grammar rule that will definitely help you in your future studies. And if you are here for the first time, then please do not forget to subscribe to the channel and press the bell icon so that you will get all notifications whenever I upload a new video. So welcome back to this class to learn more about English for free. So the first fact that we have to understand, present continuous tense. Present this is something very important for all the students and all the English language learners to master the language by learning grammar, new words, and all kinds of usages that like native speakers use in their language style. So here let's learn more about present continuous tense. What is the formula of present continuous tense is? Present continuous tense का एक फॉर्मूला होता है. जैसे कि हम दूसरे सब्जेक्ट में जैसे मैथ साइंस में भी लर्न करते हैं, वैसे इंग्लिश की ग्रामर में भी थोड़ा बहुत रूल्स एंड नियम होता है. ठीक, वो लर्न करना बहुत जरूरी होता है. ठीक है. हियर सबसे पहले जो होता है, कोई भी सेंटेंस में सब्जेक्ट, देन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हमको इज और एम और आर का यूसेज होता है. उसके बाद वर्ब. वर्ब मीन्स व्हाट इज दैट? एक्शन वर्ड्स. तो इसका रिलेटेड ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया है आपके लिए, कि अगर आपने नहीं देखा तो वर्ब्स के रिलेटेड वीडियो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे. ठीक. सो यू कैन जस्ट गो एंड सर्च in this description box, so we'll get more about verbs. Okay, so here verb का ing form follow होता है present continuous tense में. Then after normally there will be object. So first of all, we must understand present continuous tense is normally used to talk about an action that is going on now. एक action अभी चल रहा है उसको दिखाने के लिए हम मोस्ट केसेस में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज कर रहे हैं. बहुत सारा अलग अलग यूसेज होता है. ये जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के जो फॉर्मूला के यूसेजेस, देयर आर मेनी यूसेजेस, बट इस लेसन में हम मेनली पर्टिकुलरली टॉकिंग अबाउट एक्शन दैट इज गोइंग ऑन नाउ. वी हैव टू अंडरस्टैंड सब्जेक्ट अलग अलग होता है ना, काम अलग अलग लोग करता है, हम अकेले नहीं. देयर मे बी अ पर्सन, he or she, or we, they. There can be a person named Arun, Arjun, Ananya. Okay. Maybe a group of people, so they do the action. अलग अलग लोग काम करता है. ठीक है. तो इधर एक्चुअली आई के साथ हमको यूज करना है एम, देन यू के साथ यूज करना है आर, वी के साथ भी हमको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आर यूज करना है. उसके बाद आईएनजी फॉर्म फॉलो हो रहा है. उसके बाद ही इज, शी इज, देन इट इज. सिंगुलर के साथ इज आएगा. ही इज प्लेइंग, वो खेल रहा है. ही इज प्लेइंग. वो लड़की भी खेल रही है. शी इज प्लेइंग. इट इज raining outside. अभी बारिश हो रहा है बाहर. It is raining outside. It is. I am. Okay, उसके रिलेटेड भी verb ing के साथ फॉलो होता है. So here
Another one word that with subject is they. They are. They are playing in rain. They are playing cricket. They are helping me. They are helping the poor. They are cleaning the classroom. They are cleaning the road. They are. They are. It is. She is. He is. We are. You are. I am. ठीक? ये सब चीज बहुत बेसिक होता है इंग्लिश की ग्रामर में. जैसे इंग्लिश सबसे पहले जो लर्नर्स बिगिनर्स होता है उन लोगों के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात होता है. ठीक है. जैसे आप लोग धीरे धीरे बेसिक लेवल से थोड़ा इम्प्रूव हो जाएगा तो ये सब चीज आपके लिए बहुत कॉमन हो जाएगा. ठीक है. सो हियर दिस इज द रूल दैट यू विल हैव टू लर्न एंड मास्टर. So now I would like to give you some sentences that we can normally use in our daily life. कोई भी सेंटेंस जो हम ज़्यादातर यूज किया जाता है कि सेंटेंस में इंग्लिश में अगर बोलना हो डेली लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में, उसके रिलेटेड थोड़ा बहुत एग्जाम्पल आई वुड लाइक टू शेयर विद यू नाउ. आई एम अटेंडिंग ऑनलाइन क्लास. मैं अभी क्या कर रहा हूँ? ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रहा हूँ. आप क्या कर रहे हो? आई एम वॉचिंग a movie. I am talking with my friend. Or I am watching Easy English with Mono YouTube videos. I am writing a letter. I am painting. I am drawing. I am helping my mother. She is playing with me. He is playing with me. I am typing on computer. I am trying to read English sentences. I am trying to learn English grammar. I am going to the market. She is coming from the market. So these are some of the sentences जो हम normally English में use करते हैं, especially कोई ना कोई एक action है जो अभी चल रहा है उसको दिखाने के लिए. तो इसके लिए आपको अपना तरीके से बहुत सारा sentence बनाना है. And I would like you to comment below some of your ideas that you would like to talk to your friend or anybody in your daily practical life. आप रोज जो normally बात करते हैं तो ऐसा कोई sentence इस तरीके से यूज करना है तो आप वो sentences आप नोटबुक में भी लिख के प्रैक्टिस कर लो and नीचे कमेंट में भी बता देना. अगर कोई भी एक अट्रैक्टिव सेंटेंस तुमसे लगे तो definitely there will be heart and light from my side. And thank you for learning English with me. Have a nice time. Take care.